So good morning everyone and welcome to the morning meet. We'll start with technical and derivative updates first. So what we saw yesterday is that Nifty did open on a flattish note and it was a very volatile session, mainly on the back of monthly derivative settlement, wherein we tested both the 15,900 zones and 15,700 zones. So from past four trading sessions now, we have been trading within this range of 15,900 and 15,700. So we need to get a clear breakout from this level, from this range for further directional move. Although the overall trend remains negative, but if we trade 15,930, that is a swing high, recent swing high, then we may make a dash towards 16,100, 16,200 odd levels. While if you break below 15,680, we may go and retest 15,300 and 15,180, which is the 52-week low which we hit in the June series. Even sectoral indices, if we see yesterday, then barring Nifty banking and financials, all other indices closed in the red, with Nifty auto, IT, Nifty reality and metals all closing with cuts of over a percentage of points. Even Bank Nifty yesterday, what to say, if you see, it did retest 33,000 zones, but it outperformed the Nifty index, wherein it managed to close in the green and it snapped 3 days of negative closing sequence. Even for Bank Nifty, it has been trading in this 1,000, 1,500 odd points. So clear breakout from this range, that is 33,180 and 34,150. If we don't break out from this 1,000 point out range, we may continue to oscillate in this range. So if we break 33,180 on the lower side, then we may go and test 32,700, 32,500. While above 34,150, we can make a dash towards 35,000 odd levels too. Even on the institution side, yesterday, FI did had a net sell figure of 1138 crores, while DI had a net buy figure of 1378 crores. And for the month of June, FI had a net sell figure of 58,112, while DI had a net buy figure of 46,599 crores. From the derivative front, what we saw that the PCR OI had it was a flattish at 1.05, while major put additions were seen in 15,700 and 15,800 strikes, while major call option additions were seen in 16,000, 16,100 strikes. So as per this option data, it suggests that we may have a ranged session, but clear breakout will bring about a call unwinding or put unwinding, depending on where we break out. On the rollover front, what we saw is Nifty currently the June series rollover was at 75%, which is lower than its 3-month average of 79%, while Bank Nifty's rollover was at 87% as compared to its 3-month average of 84%. So Bank Nifty rollover was higher than Nifty. And on the FI statistic in FNO market, index futures, they had a net sell figure of 1296 crores. Index option, they had a net buy figure of 10,791 crores. Stock futures, they had a net sell figure of 113 crores. While stock option, they had net sell figure of 223 crores. And on the call front, in the technical report, we have given buy on HDFC AMC. We can buy in the range of 1780 to 1790. Stop can be placed at 1744. Target is 1865. While in the derivative report, we have given buy on Cummins India. We can buy the futures in the range of 1010 to 1015. Stop can be placed at 990. Target is 1058. So that would be it from my end. I'll pass it over to Bunty sir for further research updates. Over to you, sir. Thank you, Nikunj. Good morning, sir, and good morning, team. Few updates from my side. Firstly, starting with the auto, Maruti Suzuki has launched Brezza 2022 with a price starting from 8 lakhs. It's a new version of SUV Brezza ranging from 8 lakhs to 14 lakhs, which is ex-showroom, as it seeks to strengthen its presence in the SUV segment to reinforce its leadership position. The second generation Brezza will be available in manual as well as AMT options,
powered by company's next generation K series 1.5 petrol engine. Also, this new Brezza has an electric sunroof, head-up display, digital 360 camera, and 40 connected features. This new Brezza will compete with Tata Nexon, Hyundai Venue, and Kia Sonet. Maruti Suzuki has made its entry into the compact SUV segment in March 2016 with the Brezza model, and company has sold almost 750,000 units in last 6 years since it has launched. With an aim to gain market share in sub-segment SUV, this is the positive development, and we believe we are very much positive on Maruti Suzuki with a target price of 10,627. Second update on Hindustan Unilever. HUL's MD Sanjeev Mehta has been appointed as the President Commissioner of Unilever Indonesia. He will join the company's board of commissioners and chair in a non-executive capacity and oversees the policy and implementation of a corporate governance. We remain positive on HUL with a buy rating. Yesterday, our team has interacted with the management of Raymond. So the Raymond targets to capture 10 to 15% market share in ethnic category in next 5 years through its ethnics brand. This ethnics business will have a similar pricing to Manyavar. However, pricing will be slightly premier compared to Fab India. Company's real estate vertical is generating around 100 to 125 crores of sales every month. For a joint development, company is considering projects worth revenue of 1,000 to 2,000 crores. In fact, Raymond has recently signed a project on Western Express Highway in Mumbai of rupees 2,000 crores. Raymond targets to double revenue from engineering business during next 3 to 5 years, and 55% of the engineering products manufactured are exported to around 60 countries. Raymond is trying to file DRHP for this engineering business for an IPO to raise around 600 to 200, 800 crores kind of a thing. Yesterday, on another TCPL packaging has kept a planned visit for the for the analyst community, and we have visited flexible packaging unit at Grovier and offset packaging units for folding carton. This TCPL is one of India's largest manufacturers of folding cartons and India's largest standalone converter of paperboard. It has approximately 31 years of experience in providing an array of packaging solutions. Company is also an innovative player in the flexible packaging industry. It has approximately 8 manufacturing units across 5 locations in Silvassa, which we visited, Noida, Goa, Guwahati, and Hardwar. It has leading companies in its customer base. It has 100 plus customers in folding cartons and 50 plus customers in flexible packaging. On the banking sector, RBI has came out with yesterday with the financial stability report, which suggests very key points with respect to banking industry. RBI has said that Indian economy is well on the path of recovery, even though inflationary pressures and geopolitical risk warrant careful handling and close monitoring on the situation. From the banking per se, gross NPA of scheduled commercial banks has declined to 5.9% as of March 2022 from 7.5% in as of March 2021. Similarly, net NPA also has reduced to 1.7% as of March 2022. Also, gross NPA of large borrowers has declined over last 2 years, which has reached to 7.7% as of March 2022. In fact, if we say slippage ratio, which we generally focus more in terms of gross NPA, which is the new fresh slippages coming into the picture from as a NPA from the standard assets, has also declined during FY 2022. Along with this write-off, which generally banks do to maintain the lower NPA, has also come down, declined in FY22 to 20%. In this report, it has suggests that private sector banks have become very much aggressive in MSME lending, and they have increased the market share as compared to PSU banks. Also, in terms of ECLGs, the number of fresh borrowers for private sector banks under ECLGS was around 67.6 lakhs versus if we see the total amount disbursed, private banks has disbursed around 95,000 crores
as compared to 80,000 crores by public sector bank. So it shows that private sector banks were very much keen in supporting MSME sector through ECLGS. Also, lastly, macro test stress test has been done from RBI point of view, which suggests that the banks should be able to comply with the minimal capital requirements under severe stress scenario. That seems to be very much positive. Lastly but not least, very important, RBI has shared the sectoral credit data, which says that credit growth has continued to remain double digit in the month of May, and it has improved to 12.6% YOY versus 11.3% in the month of April. So it seems to be 10% as of March, 11% as of April. May suggest 12.5%. So this seems to be credit growth on a continuously improving trajectory. And the best part is in under the credit growth, the all four segments like retail, services, uh, agricultural, and personal loan, all four segments have been showing reporting the improvement in the credit growth versus month of April. So we believe overall this improvement in credit growth for the banking industry bodes very positively, and we remain very much positive on the banking industry with our top picks HDFC, ICICI, and Federal. That's it from my side. Over to you, Hitendra. Yeah, thank you, sir, and good morning, everyone. We'll continue with further research updates. Coal India is now looking to make all its subsidiaries public, as they're saying that the prices of fossil fuel has soared very high, and the power demand is also rebounded from the pre-pandemic level. And this was said by the government officials. And secondly, Bharti Airtel has got approval from CCI, that is Competition Commission of India, for their investment of Google, that is nearly $1 billion for 1.28% stake in Bharti Airtel. Third, we'll see then Bajaj Consumer is also set to diversify its range under Almond Drops by launching more in skincare and hair care products. This was a broader attempt to diversify its portfolio. And if you see then in AO Small Finance Bank, CRISIL has upgraded revised their outlook on the long-term debt for Tier 2 bonds and non-convertible debentures to AA stable. Reliance has also announced a strategic partnership with Pray Tea Manager, a global fresh food and organic coffee chain, to launch and build the brand in India. Lupin on Thursday said they received approval from the US health regulator for the paliperidone extended release tablets. This is used to treat schizophrenia in the American market. Novartis is also has they in Mumbai, in Maharashtra and Mumbai, they had opened a facility. They're extending on that for oral cancer. That would be a generic drug for that. So that's it from mine. I'll hand over to Prabhakar sir for more updates. Thank you. Thank you, team. Good morning. Gujarat Alkali Chemical, there is a news article in Financial Express where the management has given an interview. So it was very interesting interview. So I thought I will discuss Gujarat Alkali Chemical, which can be very positive for a long term. Maybe post this quarter results, the stock will start to see lot of traction. Their current capacity only in caustic soda is 5,20,000 metric ton per annum, and it will be expanded to 9 lakh. So it is almost 80% expansion they will do by end of this year, calendar year. And currently Gujarat Alkali Chemical has 11% market share in this caustic soda, and this will be 20% by end of this year. That means they will have 1/5 of Indian capacity with them, and we need to understand this is not the only product they will do. They have multiple product, and everywhere they have been expanding, and they have a tie-up with Nalco also for nitric acid, which is in very demand due to war in Russia and Ukraine. And the company has also said last year they exported 500 crores. Now the export also will increase in caustic soda. And FY22 revenue was 3,800 crores. And company expect this year revenue, FY23 revenue, to be 5,000 crores. That is more than 25% growth. I think this stock will target 1,200 to 1,400 by 18 months. So there is every correction is an opportunity to buy. We are in a bear phase of a market, and if we trade below 15,500, then the new leg of the correction will start. And if that kind of correction comes, now it could be any level. It can be 12,000 or 10,000, because
globally, there are indication that US is entering a recession. So whenever global, developed market enter a recession, it will impact growth everywhere. Now crude prices have started to correct. WTI crude is now $105. So I think one has to be very careful in short term in market, but long term prospect, identify good stock and start to accumulate good stock. There is a data on housing sales. Now, housing sales for this quarter has declined by 15%. This is a quarter on quarter basis data. So, it compares April, June 22, where total units sold is 84,930 units. Now, this is for 7 cities they have taken. And when you compare with Jan March 2022, sales were at 92,550 units. So, rising interest rate and cost of construction has impacted. But when you look at year-on-year basis, there is still growth. So, no, it is not a comparable data, but still, now housing is slowing down. But we need to understand, when we are $3 trillion economy, when we go to $9 trillion economy by end of this 2030, the housing bubble, will be the biggest. So real estate for 3 to 5 years investor is a best buy. We like DLF, we like Shobha, Kolte Patel, even Loda Enterprises, but these are for long term, not for short term. Hindustan Aeronautics, there was an interesting report from one brokerage where their order book is 82,153 crores, and they have a very strong pipeline also, which is 1,24,000 crores worth of order. And out of this 82,153 crores, now there are a lot of maintenance and other things, but only a new order is 61,000 crores, which gives almost 3 years of visibility for the company. Now, and in another news, SBI Card has announced a launch of Aditya Birla SBI Card. This will be done by AB Finance. It is very positive for SBI cards. And we need to understand, AB, Aditya Birla Group has huge employee base, and if they have introduced, then that will help SBI cards compete to the second slot which they have missed. REC has announced bonus of 1:3. For every 3 share held, they will give you 1 share as bonus, and they have announced a dividend of 4 rupees 80 paisa. This is a dividend yield stock, so we need to be mindful of that. Yesterday, RBI came with a report. In that report, they have said cryptocurrencies are clear danger. And in that, one more point is India fintech industry value projected to hit $150 billion by 2025. So cryptocurrency is a clear danger. No, I'm saying it again because many people trade in cryptocurrencies where people are losing money. So we need to update our client. With that, over to you, Sitija. Miraj, good morning, team, and thank you, Prabhakar sir, Banti sir, and Hitendra, Nikunj for all those updates. अब हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. गुजरात, यदि आप देखोगे तो कल काफी सारी ओवरऑल न्यूज आई थी. सबसे पहले ऑटो सेक्टर से स्टार्ट करते हैं. मारुति ने अपनी नई गाड़ी ब्रेजा लॉन्च की है. शुरुआती कीमत होगी 8 लाख की, और जो टॉप मॉडल होगा वो अराउंड 14 लाख का होगा एक शोरूम का. ये सेकेंड जनरेशन मॉडल है ब्रेजा का, जो कि उनका के सीरीज 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन यूज करेगा. फीचर्स में यदि आप देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ, हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, 40 कनेक्टेड फीचर्स सब आते हुए दिखेंगे. तो ये ओवरऑल मारुति को मदद करेगा वापस अपने मार्केट शेयर को गेन करने में, और ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में अपना ओवरऑल एक जो गिरता हुआ मार्केट शेयर था उसको गेन करते हुए पिछले जो ब्रेजा उन्होंने लॉन्च की थी वो 7.5 लाख गाड़ियां टोटल उन्होंने बेची थी लॉन्च से अब तक. तो ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा. हमारी बाय रेटिंग है मारुति पे और टारगेट है 10,627 रुपए. दूसरा, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे यदि आप देखोगे तो उनके एमडी संजीव मेहता, उनको अपॉइंट किया हुआ है प्रेसिडेंट कमिश्नर ऑफ यूनिलीवर इंडोनेशिया. तो वो ज्वाइन करेंगे बोर्ड को कमीशन और ये चेयर करेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में.
टू ओवरऑल जो उनकी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। हमारी ओवरऑल बाय रेटिंग है HUL पे भी। कल हमने रेमंड के मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्ट किया था। की टेकअवेज ये है कि रेमंड कहता है कि उनका टारगेट है 10 से 15% शेयर एथनिक कैटेगरी में कैप्चर करना। आने वाले 5 सालों में एथनिक्स करके एक नई वो ब्रांड लॉन्च करेंगे। जो एथनिक्स ब्रांड होगी उसकी ओवरऑल प्राइसिंग जो है वो मान्यवर से कंपेरेबल होगी, हालांकि फैब इंडिया से थोड़ी सी प्रीमियम में होगी। रियल एस्टेट वर्टिकल में भी यदि देखें तो वो कह रहे हैं कि वो रियल एस्टेट वर्टिकल स्टेडली 100 से 125 करोड़ का फंड जनरेट करता है एवरी मंथ, और जॉइंट डेवलपमेंट्स करना है उनको उसमें काफी ऑलमोस्ट 1000 से 2000 करोड़ के रेवेन्यू प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं उन्होंने उसमें। अभी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में भी उन्होंने एक 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट लिया हुआ है। कंपनी का टारगेट है कि रेवेन्यू जो इंजीनियरिंग बिजनेस से आएंगे उसको नेक्स्ट 3 से 4 साल में डबल करना है, और ओवरऑल वो DRHP भी फाइल करना चाहते हैं अपने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग बिजनेसेस के लिए, जिससे वहाँ 600 से 800 करोड़ रेज करना चाहेंगे। इसके अलावा हम लोग ने प्लांट विजिट किया था TCPL का सिलवासा में। जो उनका प्लांट है वो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग यूनिट था, वो ओवरऑल ऑफसेट पैकेजिंग यूनिट है और फोल्डिंग कार्टन्स बनाते हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है फोल्डिंग कार्टन्स के लिए, और ओवरऑल 31 साल का एक्सपीरियंस है। उनकी 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है 5 लोकेशन में। कल जो लोकेशन हमने विजिट की थी सिलवासा में है प्लांट, नोएडा में है, गोवा में है, गुवाहाटी में और हरिद्वार में है। ये ओवरऑल लीडिंग कंपनी है और 100 से ज्यादा कस्टमर बेस है, तो हमारी ओवरऑल इस पे एक पॉजिटिव व्यू है। इसके अलावा RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में कहा है कि जो भारतीय इकोनॉमी है वो ओवरऑल रिकवरी के पाथ पे है, हालांकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस रहेंगे, पर उन्हें क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। जो GNPA रेशियो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का वो भी घटकर 5.9% आया है मार्च 2022 में, कंपेयर टू 7.4% मार्च 2021 में। यदि नेट NPA का रेशियो देखेंगे तो 1.7% है वो मार्च एंड में, और ओवरऑल बैंक का ग्रॉस NPA रेशियोज जो है लार्ज बोरोवर्स का वो भी घटकर आया है 7.7% पे। तो ओवरऑल NPA की सिचुएशन में काफी कंफर्टेबल जोन पे अभी बैंकिंग है। ओवरऑल यदि प्राइवेट सेक्टर बैंक का देखें तो वो MSME लेंडिंग में काफी अपने शेयर बढ़ाती हुई दिख रही है और अग्रेसिव दिख रही है। ऑलमोस्ट 67.61 लाख प्राइवेट बोरोवर्स है जिनको प्राइवेट बैंक ने लोन दी है, और वो ओवरऑल अमाउंट होता है 95,700 करोड़ का, कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक जिन्होंने 79,800 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो ये हमें दिखाया गया है कि प्राइवेट बैंक काफी अग्रेसिव है। उन्होंने ये भी कहा है कि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली डबल डिजिट ट्रेजेक्टरी में बढ़ रहा है। मई मंथ में 12.6% पे था। इसके पहले यदि आप अप्रैल में कंपेयर करोगे तो 11.3% था, इसके पहले 10% था। तो ये कॉन्स्टेंट एक ग्रोथ पाथ पे दिख रहा है क्रेडिट ग्रोथ। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, और HDFC बैंक, ICICI बैंक और फेडरल बैंक हमारी फिक्स रहेगी। कोल इंडिया ने कहा है कि वो उनकी जो ऑटो सब्सिडरी है उनको पब्लिक करना चाहेगी। ओवरऑल फॉसिल फ्यूल्स और पेंडेमिक के बाद जो डिमांड बढ़ती है, तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा एक डेवलपमेंट देखी गई थी। भारतीय एयरटेल को CCI का अप्रूवल मिल गया है गूगल के इन्वेस्टमेंट के लिए, जो अराउंड $1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले थे भारतीय एयरटेल में 1.28% स्टेक के लिए। बजाज कंज्यूमर केयर ने कहा है कि वो डाइवर्सिफाई करेगी अपनी फ्लैगशिप रेंज आलमंड ड्रॉप्स के ब्रांड के द्वारा। ओवरऑल स्किन और हेयर केयर के लिए नए प्रोडक्ट्स इसमें लेके आएगी। रिलायंस ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है पर्टे मैंगर के साथ। ये ओवरऑल ग्लोबली फ्रेश फूड और ऑर्गेनिक कॉफी चेन है, तो ये लॉन्च और इसको बिल्ड करेंगे इंडिया में रिलायंस के थ्रू। लुपिन को ओवरऑल एक अप्रूवल मिली है US हेल्थ रेगुलेटर के पास से फिलिपेड्रोइन एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स के लिए। ये बेसिकली साइजोफेरिया में यूज होता है अमेरिकन मार्केट में, और नोवार्टिस को इंडियन मार्केट में कहा उन्होंने कहा है कि उनका जो डिवीजन है सेंडोस टेक्निकल ऑपरेशन वो उन्होंने नया इनोग्रेट किया हुआ है महाराष्ट्र में। ये ओरल जेनरिक कैंसर ड्रग के लिए होगा। इसके अलावा गुजरात अल्कली जो कि है ओवरऑल उनकी मैनेजमेंट का एक ओवरऑल इंटरेक्शन आया था कल न्यूज़पेपर में। ओवरऑल काफी अच्छा था, और यदि आप देखोगे तो 5.2 मिलियन टन पर एनम की उनकी कॉस्टिक सोडा की कैपेसिटी है जो वो एक्सपेंड कर रहे हैं 9 लाख मीट्रिक टन के अलावा बाय दिस ईयर एंड। ओवरऑल करंटली उनका 11% मार्केट शेयर है कॉस्टिक सोडा में, पर इस एक्सपेंशन के बाद हमें देखा जाएगा कि ये मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 20% पे होता हुआ जाएगा, तो काफी एक ओवरऑल बड़ा मार्केट शेयर इसको मिलते जाएगा। और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, सभी स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट्स में वो एक्सपेंड करते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल यदि आप देखोगे तो एक्सपोर्ट उनका 500 करोड़ के अधिक था, और कंपनी ने कहा है कि प्रीवियस ईयर उन्होंने 3,800 करोड़ की रेवेन्यू की थी,
और FY23 में ये रेवेन्यू 5,000 करोड़ तक हो सकती है, यानी कि 25% का जंप देखने मिल सकता है। यदि कोई 18 महीने की अवधि के लिए लेना चाहे तो इसमें हमें लगता है कि 1200 से 1400 रुपए की प्राइस आ सकती है। ओवरऑल हम एक बेयर फेज में है। यदि हम 15,500 के नीचे जाते हैं तो लेवल्स काफी नीचे तक के आ सकते हैं, जो हम लगातार आपको कहते रहे हैं कि 12,000, 10,000 या कोई भी लेवल्स पे मार्केट बॉटम आउट कर सकता है। तो कोई भी निवेश करे तो वो एक फेज मैनर में करे, एक ही साथ सारा नहीं करे। ग्लोबली भी हमें देखा गया है कि जो इम्पैक्ट दिख रहा है यूएस में, वो आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल यूएस भी रिसेशन की तरफ जा रहा है। तो हमें ओवरऑल केयरफुल रहना चाहिए हमारी पोजीशंस के लिए। अगर हाउसिंग डेटा के सेल्स भी देखें तो वो क्वार्टर क्वार्टर 15% नीचे गिरते हुए दिख रहा है। अप्रैल में जून में देखे तो 84,930 यूनिट्स बिके थे। हालांकि इसी को प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करें, यानी कि जैन फरवरी मार्च 2022 से, तो 92,550 यूनिट्स उस क्वार्टर में बिके थे। तो ओवरऑल ये हमें देखा गया है कि एक स्लम्प दिख रहा है। पर हालांकि आने वाले 3 से 5 साल में यदि भारत को 3 ट्रिलियन से 9 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक जाना है, तो हमें लगता है कि हाउसिंग में एक अच्छा खासा बूम आ सकता है। तो डीएलएफ, शोभा, कोल्टे पाटिल, लोधा, इन सब में इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं। पर ये ओवरऑल व्यू रहेगा 5 साल का, ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म का। एचएएल का कल एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आया था जो हम लोग ने शेयर भी किया था। यदि आप देखोगे तो काफी अच्छी ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, 42,153 करोड़ की। इसमें जो नई ऑर्डर बुक है वो 61,000 करोड़ की है, जो कि ऑलमोस्ट 3 साल की विजिबिलिटी देती है कंपनी को। तो ओवरऑल ये सभी कैटेगरीज में है, एलसीए में है, एयरक्राफ्ट्स में है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में है, अटैक हेलीकॉप्टर्स में है। तो ये ओवरऑल एक पॉजिटिव होगा एचएएल के लिए। कोई भी करेक्शन हो उसमें हम इसको बाय कर सकते हैं। एसबीआई कार्ड ने आदित्य बिरला के साथ पार्टनरशिप की, आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ। तो ये ओवरऑल कार्ड्स इश्यू करेगी। आदित्य बिरला की एक अच्छी खासी एम्प्लॉय बेस है, तो उसके चलते हुए भी हमें लगता है कि इसमें एक ओवरऑल पॉजिटिव एसबीआई कार्ड के लिए हो सकता है। आरईसी ने 1:3 बोनस दिया, यानी कि 3 शेयर पे 1 शेयर बोनस मिलेगा, और 4 रुपए 80 पैसे के डिविडेंड भी है। और आरबीआई की कल जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक क्लियर डेंजर है। फिनटेक्स जो है उनकी $150 बिलियन की वैल्यूएशन होगी, पर क्रिप्टो करेंसी से हमें दूर रहना चाहिए, वो एक क्लियर डेंजर है। ये बार बार हम लोग अपडेट भी करते आए हैं, तो आपके क्लाइंट्स भी होंगे, उनको आप एक बार ही अपडेट कर सकते हो कि ओवरऑल इससे हो सके उतना दूर रहिए। So that's it all from our end. We'll conclude the call over here. Thank you everyone for joining in and have a nice day.